Okay, good morning students. Welcome to another lecture of Learning R. So today is day 17 and we are still continuing with the data wrangling part, because data wrangling is an important concept in R and it is very much useful when you are using computational or bioinformatics packages, because there are R is composed of variety of bioinformatics packages to analyze bioinformatics data. So it is very just giving more time to data wrangling part, because this part will be extremely useful while you will be learning about the computational biology packages and the data analysis of your computational data or your wet lab data. So let's start, and today's lecture is will be discussing about Tibbles. So today we will be discussing about Tibbles. Okay, so what are Tibbles? These are basically a data frame. I mean, it is a basically type of a data frame or a modified data frame. जो हमने पहले देखा data frame क्या, data frame में you have columns and rows and उसमें data sort of data पड़ा रहता है आपका. Now what are Tibble? Tibble is a modified data form or data frame which can tweak some of the older features from the data frame. So basically उसमें कुछ थोड़े से extra ऑप्शंस आते हैं आपके पास नॉर्मल डेटा फ्रेम से. आपको डेटा एक्सेस करने के लिए, डेटा पर कुछ मैनिपुलेशन करने के लिए आपके पास थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं. दैट एंड दिस इज द ऑल डिफरेंस फ्रॉम अ नॉर्मल डेटा फ्रेम एंड इन अ टेबल एंड अ डेटा फ्रेम. Okay, so before going into the table, let's install some packages and let's call your Tibble, because जो कुछ भी अगर उसमें करना होगा तो you need to have a Tibble, you need to install certain packages and call those call the library of Tibble. So okay, so now we are using the data frame iris, जो हमने पहले लेक्चर्स में यूज़ किया iris, उसको हम as underscore Tibble करके कॉल करेंगे. So as underscore Tibble, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि it is a function after which whatever you are written it will convert into that form. So as data frame अगर आप लिख रहे हैं तो जो भी आप उसके आगे कुछ लिखेंगे that will be converted into a data frame. अगर आप as Tibble लिख रहे हैं तो whatever you are putting in it will be converted into a Tibble. So iris I'm including here, and then let's see if it is okay. So you can see here after considering it as Tibble, it is giving you the certain more details like sepal length, sepal width, petal width and the species, and here your db1, db2, these are certain small details. Okay, now this is the thing that this is you have converted your existing data set into a Tibble. Now you can also create Tibble from scratch. Okay, now let's see how we'll do that. We'll just define Tibble and then open bracket, and then let's suppose we are typing x is equal to 1 to 5 and y equals 2 and then z equals x to the power 3 plus y. Okay, z should be small here, and then we are going to close the bracket. Okay, now let's try to run this. Okay, so it is saying object x not found and error in evaluate tidy. So I think मैंने एक पैकेज इंस्टॉल नहीं किया है. ओके, सो जो पैकेज इंस्टॉल करना है उसका नाम है install.packages, और सॉरी tidyverse इस पैकेज का नाम है. उसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड जैसे पहले भी हमने देखा है, इट इज़ हाउ टू इंस्टॉल अ पैकेज, install.package, and then you have to type the name of the package Tidyverse, and then you will run it, and it is installing now, and then you will call this, or you can call library Tidyverse
Okay, so and now you have created a function where x and y, and then you have created 3 functions, and now you want to run this tibble. So here it is how this will be shown. Now here you haven't given any the column name. आपने कॉलम नेम कुछ नहीं दिया है, जैसे आपका डेटा फ्रेम में आइरिस में आपका एक कॉलम नेम था स्पेसिफिकली, आप रिजल्ट यहाँ देखेंगे तो आपके कॉलम नेम थे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, आपने उसके डेटा फ्रेम में आपका कॉलम नेम दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे हमने कोई कॉलम नेम नहीं दिया है, बट टेबल ने उसको ऑटोमेटिकली अरेंज कर दिया है कॉलम नेम के साथ। एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यू हमने डाली 1 2 5 और 2 वाई की वैल्यू हमने 2 रखी सब जगह, और कॉलम जेड को इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पे, तो इसने इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ डेटा फ्रेम। ओके, और कुछ देखते हैं इसमें। लेट्स अनदर एग्जांपल इज दिस वेयर आई एम क्रिएटिंग अनदर टेबल variable my underscore table, and table created, we have considered 3 column name, gene A, gene B and gene C, and we are putting 2 values in it, 4501, 4705, 2509, and then we just say printing it. So let's see, yeah, as you can, if you try to run it, then you are getting the table of a 2 into 3 matrix kind of a thing. All right, now what else we can do in here? We can also let's suppose in the last lecture we have created a data frame by day. Okay, now let's try to print by underscore day. Let's see how it is printing. By day not found. Okay, why it is saying it is not found? Okay, so मैंने वो एरर सॉर्ट आउट कर दिया। उसमें कुछ पैकेजेस की एरर थी कि ये वाला पैकेज आपको टाइडीवर्स का पैकेज इंस्टॉल कर लिया था हमने, dplyr का पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ता है उसके लिए, बिकॉज वो ऊपर से कोई फंक्शन हम यूज़ कर रहे थे। तो अब हम प्रिंट बाय डे अगर कर रहे हैं उसमें, सो एज यू कैन सी हेयर इट इज़ गेटिंग प्रिंटेड एज अ डेटा फ्रेम। अब लाओ सॉरी जो भी इसका डेटा हुआ उसको हम एज अ प्रिंट कर रहे हैं। Now if you are trying to print this as a data frame, and now if you want to put the name by underscore day, okay, now let's try to see if we are able to run it. See, you are able to get all the details, and you are getting printed it in the form of a data frame. All right, now उसका हेड भी देख लेते हैं। हेड के साथ हेड by underscore day, and then we will see you are getting the first few entries. Now we will try to access the last database जो हमने यूज़ किया था NYC वाला, NYC flight 13, NYC flight 13, and then we are accessing flights, and then we are using this sign percentage less than percentage. Okay, and then we are trying to print first 10 rows with the width, मतलब जितने भी कॉलम्स उसमें हैं is equal to INF infinite. Alright, now let's try to see if we are able to run this or not. Okay, so what it is doing is NYC, we have accessed the NYC flight 13 database data frame, and we have accessed the flight column, and we have printed the initial 10 rows with the width of infinite. That means that whatever the width और जितने भी columns उसमें होंगे वो सारे columns उसमें आ जाएंगे. And now what this function does, this is a new function that we are using. The purpose of this function is it takes the value from whatever is in its left, it will take it from that value from its left and will provide it to the वेरिएबल और द थिंग विच इज़ प्रेजेंट ऑन इट्स राइट, यानी कि लेफ्ट में से लेके ये वैल्यू आपके राइट में पास करता है। और न्यू लाइन मतलब आपको कोड देखने में थोड़ा आसान करता है कि आपका डेटा यहाँ से अगर आपने यहाँ लगाया है तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ नया हो रहा है, मतलब कुछ नया लाइन में ऐड कर सकते हैं, जैसे हम लोग न्यू लाइन का एन ऐड करते हैं, ऐसे ये सेम फंक्शन है, बट इट ऑल्सो डज द वैल्यू अपने लेफ्ट से लेगा और अपने राइट में प्रिंट कराएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें एक और फंक्शन है आपका सब सेटिंग। Okay, subsetting of this data wrangling part or table. So let's create df table, and then we are putting something in it. We are putting
tibble this thing NYC flights का डेटा हम इसमें पूरा डाल रहे हैं इस टेबल में. So this will be created as a okay, we have set the value. Then we will, if we try to print this df tibble, now you will get all the data of the New York Flight Exchange. All right, and then if you want to access the particular column, then you can use the $. ये आपका कोई भी इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, कॉलम कॉल करना चाहते हैं, यू कैन कॉल दैट एंड देन इट विल प्रिंट ऑल द करियर्स. सो ये आपके सारे करियर्स प्रिंट कर देगा, जितने भी करियर्स आपके उसमें ठीक है. नाउ इफ़ यू वांट टू गो टू द स्पेसिफिक कॉलम, यू कैन ऑल्सो गो बाय स्क्वायर ब्रैकेट टेबल स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इफ यू वांट टू गो टू कॉलम 2, देन it will print all the values in column 2. So column 2 में अगर आप देखेंगे, you only have, sorry this one नहीं, आपका df tibble, this one. So column 2 is all the month. So whatever month is 1, 1, 1, 1, all the values in month will be getting reflected here in the second column. Okay, now what else you can do? We can also use this percentage sign again. I'll show you again how to use it. df underscore tibble, and then we are using this percentage greater than sign. We are putting in whatever is in the left will be forwarded to the right. So आपके लेफ्ट में, अब आपके इस साइन के लेफ्ट में क्या है, df टेबल, यानी कि आपका पूरा डेटा फ्रेम टेबल का वो आपके इसके साइन में, एंड देन वी आर पुटिंग इट इन career. Okay, now let's try to see what it does. So whatever is in there, df table, in the df table, and you are calling the career. Okay, or it's you can say it's another way of calling the career column. All right. So this is how interesting the R is. I think you have understood today's lecture. Let me know in the comment box if you have any doubt. Okay, thank you.